Good evening, everyone. The CodeShift chapter of VIT Bhopal brings you a webinar from an entrepreneur and a mentor, Mr. Varun Tangri. Varun sir, how are you? बहुत आवाज आई. Good, really nice. Thank you, Arpita and Abhishek, for having me here, and looking forward for Yes, a sir. great session. Yes, sir. It is a pleasure and honor to have you with us. Yes, sir. Same here, brother. So, sir, we saw that you have worked at Samsung and you're the co-founder of Cubuster at TOS. So, how was your journey? How was all of the experience there? So I would say that any entrepreneurial journey for that matter is a roller coaster ride. Frankly, people and young people like you who believe that it's going to be all fun and games, I would tell you that entrepreneurship is a long haul. There are very few people who would enter into entrepreneurship and become successful in, let's say, a 2 year or a 3 years time frame. So it's a long haul. So how I started is I graduated in 2009 from Delhi College of Engineering as a software engineer, and but when I entered in 2005, um, I saw the computer industry booming at that time, the software industry very specifically. So when I was in second year, I started something, a private organization kind of a stuff inside college itself, and we used to, so there were like a group of 7 8 people, friends of mine who were good at coding. So we formed a small team, and we started giving out web development services to customers outside of the college. So there were freelance.com, which was coming up at that time, and there were a lot of freelancing opportunities available. So on my entrepreneurial journey actually started from college itself, when I was in second year, and the group of friends got together and started making some web projects for customers in India and abroad. Um, so so for the next 3 years we kept on doing this thing, and we made decent amount of money doing that. But see, like after graduation, everybody goes and joins their jobs, right? I also got placed in Samsung from my college itself, though when I was graduating in 2009, I really didn't want to join Samsung, because at that time Flipkart and Snapdeal were coming up as this startups who were getting big fundings. And big funding, by big funding I mean only $1 million or $2 million kind of a stuff. But in 2009, still the word entrepreneur was a very not a very popular word. It has become off late in last 2 3 years that entrepreneurship has become great. So in 2009, when I was graduating, I wanted to, frankly, not take up the job and do something of my own. But being from a middle class background, father being a banker, mother being a housewife, and my elder brother was from IIT BHU, and he was placed at Microsoft. He's elder to me. So all of them said that it's entrepreneurship or starting your own company, as it was said then, that starting your own company is not a child's job. You need to do a lot of things to do that. So why don't you join a job first, take a little bit experience, and then see how it goes. The prime motive of theirs was not to make me fall into this trap of becoming an entrepreneur. It was risky game. Even today it's risky, but back then it was a distant dream. So what they said is, ki, go and join a job first, take experience, and then if you feel like doing something of your own, then you can take a plunge and do it. So I very reluctantly joined Samsung in Noida in 2009. And from day one, it was not my choice of work that I wanted to do for the rest of my life. But I, because of this peer pressure and parental pressure, I kept on doing it for the next almost 2.5 years. But beyond that, it became unbearable for me, and then I thought that now it's over. I can't bear this anymore. I'll have to go out and do something of my own. I could do a lot better than what I'm doing here. So before I could complete my 3 years in Samsung, 2 months before that, I just resigned and came out. So it was 2012 mid when I came out of Samsung, and so I had no idea of
what I need to do. I had a knack of doing making web applications, and Android applications were also coming up at that time. 2012 was the time when Android was also becoming popular. So I thought that why not start doing something in Android development and web development at that time. So Maplegraph Solutions Private Limited was my first startup, which I started in December of 2011, but officially joined in September of 2012. And I had zero money. All the salary that I had was all gone because I spent all of it on myself. So it was all gone. I didn't have any money in my pocket, or I didn't get any money from any friends, family, relatives, no one, and also had some education loan on me. So I started with, I would say, not zero but in negative. uh, but I knew that I had sufficient skill set to make it at least survive it for some time. So I won't sleep hungry stomach, and I'll be pretty okay doing that. But since I didn't have any money at that time, so hiring employees was the biggest challenge. How could I hire employees if I don't have any money? So I rather hired interns from my own college, Delhi College of Engineering. So I had a good reputation back then in college. A lot of my juniors respected me, I could say. So 11 of them, and they were all toppers of their CS branch. So they said, okay, I will come to the office. So I purchased, not I rented out a small apartment near my college in Rohini in Delhi. So rented out as a 2 BHK apartment, and started this company called Maple Grass Solutions with 11 interns. And the idea was to give services to customers making Android apps and web apps. It worked well for some time, for almost 2 years, and by that time my elder brother also joined. So he graduated from IIM Lucknow then in 2012. So he also thought that, okay, why not give it a shot at entrepreneurship. So he also joined in 2013. So we ran that company for almost 2.5 years, and eventually, because we were making money to just give it to interns, the company was not making much of money. And when the interns left, eventually we were left with three people, and almost again zero money in bank. It was almost bankrupt by that time. So company ran for almost 2.5 years, but we didn't make any money. And again, Arun also, my elder brother, also had loans, and IM loans are again bigger. uh, so uh, so again, 2.5 years into entrepreneurship, we had zero money in bank, zero employees, no interns, and that time we were thinking of closing down and shutting down the company because it was not going that great. But something happened, when you have that when you have that perseverance of not giving up and still keep on trying. We had only 50,000 rupees left in our bank account. And we thought of putting that into a conference that was happening in Gurgaon, where all these big companies were coming in. And we wanted to just talk to all these big players and take contracts from them for web development and app development. Eventually, we found Select City Walk Mall. There is a mall in Saket, in Delhi. They were looking for some companies who could help them bring their mall online. So we approached them, and that became our changing, I would say, the milestone, wherein we started getting almost 2.5 lakh rupees per month as a retainership on a monthly model. Um and then so at least that gave us hope that we can make money and we can survive. So we hired 2 3 people, and they also gave us an office space inside the mall, so it saved us a lot money on rent and stuff like that. So the company kind of started gaining momentum again. And this was late 2014, I'm talking about. Eventually what happened was, we also wanted to make a product, not just service, because by that time we understood that there are two kinds of companies. One is a product company, one is a service company. So we were service company by that time. We were just giving services to other people. So we thought of making our own product. And since there were a lot of restaurants inside the mall, so we thought that why not start making an Android based point of sale system, which is basically a billing
system for these restaurants. And since they were using these Windows based big systems at that time, so we thought of making it a small app kind of a billing solution, and it was not existent in 2014-15 time frame. There was nothing of that sort which was available. So we started making that and deployed at the food court of that mall. Even if you go today, the still the same application is working there. So we installed in January of 2015, and eventually it was a bomb. It bombed really badly, but within a frame of 2 weeks, we were able to fix everything and make it work. And then it started working well. So our first customer was Red City Work Mall, where we installed our first point of sale application. What happened in 2 months time frame? Zomato actually saw that product installed at the food court. So some senior folks at Zomato actually got to see that product, and they were looking for a company who could make Android based billing solution for restaurants, because they wanted to get into the back end of the system. They were still a B2C company serving customers, but they wanted to go into the back end side of the restaurant and managing restaurant operations. So they saw the product, and then they called me and my brother for a short meeting, that come over, aa jao baat karte hain, and then let's see how it goes. So we went there in March, and we had a very long 4-5 hours of discussion about how the product is, what is the future that you're looking at, and how big is the team. We were 5 people team at that time. We were 5 people in the company, so that was the team size. uh, so they liked the product, they liked the team, they liked everything about it, and within the span of this 3-4 hours of discussion, they rolled out an acquisition offer to us, that we want to acquire your company and your product, and that will be absorbed by Zomato, and then we'll see how we can make it big. So it was again a very turning point for us, because we never went there to sell our company, right? We went there for a normal discussion, and then there is this guy who was offering a hefty amount, I would say like X million kind of a stuff, in dollars. So that became a little okay. This is now fruitful, and the journey in 2012, which started, has in within 3 years of time, has come to a point where somebody is actually giving you plethora of money for something, for a 5 people team. So it actually changed the perception, the mindset, and it felt like we have made something substantial in our lives. So we sold the company, Zomato acquired us, and since we were 5 people team, I would say, not even a company per se. So we got absorbed in Zomato. So we joined Zomato, and our task was to take it big and make this product available across all restaurants in India and abroad. So that started on a very good note in 2015. April of 2015 is when we joined them. But what happened is, can I take a little more time? If Yes, Sure, sir. Yes. sure, sure. Sure, sir. So what happened in 2015 was Swiggy became really popular, and Yeah. Swiggy was getting huge funding, and online world was really going gaga with Tiny Owl and other players also coming in. So Zomato felt like missing out on that opportunity, because they were not big in online ordering section. They were good in catalog section, but they were not good in online ordering, which Swiggy was killing at that time. So the entire focus of the company shifted to online ordering, and point of sale, which was our product, become a little back burner for them, I believe. So it was very so they made it very clear to us that point of sale is what they don't want to do for a very long period of time, because now they have a threat in front of them in terms of Swiggy, who's getting a lot of funding and stuff like that. So they said, "Ki, you're free to do whatever you want to. If you want to continue working in Zomato, you can do that, or if you want to go out and lead your life, whatever you want to do, you're free to do that." So we took a conscious decision, after spending 15 months in Zomato. In 2016 June we came out, and eventually all, like, everyone who was working with us at that time also came out, because they believed in the stuff that we were doing at that time. So the entire team of 5-6 people who was working on that product came out in 2016, and from there onwards we started making Qbuster, which again is a billing application, but it is for a wider set of businesses. Like, it's for general retail, it's for kirana, it's for spa and salon, it is for restaurants, it's for electronic stores. So now Qbuster is a
much bigger product than what it was in 2016. And so for the last, I would say, 4.5 years, Cubuster team has grown from 6 people to close to 50 now. And uh, and we have been now is the time when Android based applications for billing, B2B Android based applications are getting big, and we are getting big ticket customers like Hindustan Unilever, Pine Labs, MSwipe, and all these guys, and EasyTap. They are taking and reselling our softwares, and we're churning huge numbers now. So 2020 was expected to be great year because we were on a very awesome trajectory by that time, but the world closed down. But 2021 looks very promising, and so let's hope we should be at least 100 people team by the end of this year, hopefully. So that's been So the you journey. say you're from DCE. So it's like you were born and brought up in Delhi itself. Yes. Nice. So am I. Okay, I have one more question for you. Yep. How did the pandemic actually affect your personal and professional life? And which one did it affect Uh, more? Good question. So, see, personally, frankly, for the last 9 years, I was churning day in and day out. In entrepreneurship, there are no Sundays, there are no weekends. You don't have your nights, you don't have your days. And those who say it's a very easy and journey, no, it's not an easy journey at all. So it actually took a lot of toll. It takes a lot of toll on your health, mental health, physical health, and stuff like that. So when pandemic actually started in March, I was a little bit relaxed that I'm going to at least stay for 3 weeks inside home and not worry about roaming around here and there for stuffs. So I was a little happy, I would say, that the pandemic has started and I will at least get some rest for 3 months or 3 weeks at least. Though it's stretched out, and we haven't still started our office. Our office is going to reopen on 1st of Feb now, so we'll be restarting our office. So it will be close to 10 months that we'll be locked inside our houses and not going anywhere. So what started with a sigh of relief, actually, in the middle of it started getting a little tenseful because see, I live with my parents and my brother, and when you live in under the same roof with your parents, and so it's a different stuff. And see, I'm still not married. 33. I'm still not married, so it's in a Punjabi household, it becomes a little more difficult when you hear your parents every Yeah. day talking about your marriage. My brother is also not married, so he's elder and still not married. So we are two candidates in the house who are unmarried, and Punjabi parents at the age of 33, 34, they're killing us. So that's the only thing which has bothered me. Business wise, frankly, my business has grown in pandemic because we provide solutions to take your business online. So if you have an offline store, we give you software so that you can take your business from offline to online. So it is a tool that retailers can use. So in pandemic, everybody wanted that these kinds of tools, right? So it's wrong to say, but thankfully pandemic has turned out to be great in our favor, and we got good business during this pandemic. So professionally, it has things have grown. Personally, I got relaxed. Now my body is able to. I can take it another 10 years now because I'm that relaxed. Marriage. Let's see. Yeah, Let's see. okay. That's it. So Coach Chef actually focuses on competitive programming a lot. So how important do you think is competitive programming for placements and other stuff? Uh, And did you if do it at your time? See, if you talk specifically about placements, because the question says how important is it for placements, then yes, it is very important for placements. But for life, maybe not. I don't know. See, I'm a programmer myself. I still do certain, like I still do programming sometimes out of just hobby. So I keep developing online tools in PHP even today. I love doing it, so I keep doing it. But as far as competitive programming for life is concerned, again, it's a lifestyle rather than a requirement. So anybody who loves programming in a competitive manner would keep on doing it even 10 years down the line. He would find that kick of doing it. But is it necessary to sustain in a life paradigm? Not really, because programmers tend to move to different roles 5 years or 6 years, or maybe within the first 10 years of their programming career, right?
they move from programming job to program management, and then in bigger roles. So they leave programming anyhow within 5 to 6 years of, or maybe by within 10 years of joining job, their first job, right? So after you graduate, let's say you graduate when you're 21, so by the time you turn 30, you're no more coding, right? Mm. So coding as a lifestyle is always good, because then, like playing sudoku, right, or playing chess, it's more like that you love doing it, so you keep on doing it. But will it be sustained for life? May not happen, until unless you go into that zone itself, you become a professor or a lecturer, or you go into masters or do a phd, and then, so if that's not your path, in 99.99% of the engineers that I meet, after 5 years of graduating, they are not doing programming at all. But for job, yes, if you are a good programmer, obviously you will be preferred first, because companies would prefer to take you if you are good at programming. So to take up a job from right out of the campus, it is good. You should do it. Uh, will it be sustained for life? Perhaps, maybe no, maybe no. Like, and in today's scenario, you see white hat junior teaching 5 year old Mm. kids programming. That's bullshit. Yeah. That's bullshit. That's That's just parents wanting their kids to become programmers. It's not the सब पागल the kid बना रहे हैं सर. himself. It's Well, not the kid that's a himself lot who of wants to do pressure. it, right? It's just a parental pressure. They want to see their Yeah. kids programming out of no reason. Yes, Like, he might be a yes, good sir. That fashion is true. designer, but no, coding कर तू क्या बकवास है. क्या करे सर अभी सर. हमें आपके अभी चरण में ले लो सर, और एक दो मतलब और थोड़े सवाल हम पूछेंगे. ठीक है बिल्कुल. सर. So basically sir, many a times it हम्म, happens that when in placements we need to categorize companies for like some companies focus on computer programming or programming in हम्म, general, and हम्म, some companies focus on developments and projects itself. तो हम्म. सर हम ये कैटेगराइज कैसे करें, मतलब जब हमें कौन करे टारगेट करना है कैटेगराइज? कंपनीज को. हाँ, ओके, जब हमें ओके. हम प्लेसमेंट्स टारगेट करें, ऑब्वियसली हमें उधर जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. हम्म. सो गुड वेयर क्वेश्चन. डू वी गो? गुड क्वेश्चन. बट अगेन मैं पता है, मैं बोलता हूँ कि इट इज ना, sometimes it is not how you planned it out. So I wanted to go to Microsoft because my brother was there. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. यस सर, यस सर, यस. So I wanted to go and join Microsoft because my brother was there. So my target company was Microsoft per se. But when I appeared in that exam with full throttle, I was perhaps in the bottom 20 people, right? Even though I like prepared well for that examination. So it's not where you should focus, that this company will ask this, so I should focus this. Rather, choose a area of interest. So let's say, for example, you are very good in Node. Just take it up. You are very good in Node. Become a champ in Node. There will be a company who will ask that skill set, and you will get placed there. So it's the other way around, that you develop your skill set, work on something which you love doing, and become at least master in one or two. You may know 10 different stuff, you may know Java also, you may know algorithms also, but again, a company like mine would come and ask about React and Node. Okay? And the person who will be good in React and Node, I'll pick him. सिंपल सिंपल सी बात है, राइट? सो ऐसा मत करो कि मैं कंपनी के हिसाब से तैयारी करूं, नहीं, तैयारी के हिसाब से कंपनी ढूंढो. उल्टा करो कि तुम देख लो तुम्हें क्या अच्छा आता है, और जो अच्छा आता है ना, फिर जो कंपनी उसमें से आए उसमें अप्लाई करो. फिर वहां नाम भी मत ढूंढो कि ओके ये मेरी ड्रीम कंपनी थी, गूगल आएगी, गूगल ये पूछती है तो मैं उसकी तैयारी कर लूं. यू विल बी behind a lot of people who are good in that particular domain, so you'll be fighting a lost battle. तो ऐसा मत करो, प्लीज नेवर डू दिस कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस कंपनी और दैट कंपनी. बिकॉज जिसका फोटे होगा ना, जो जो वो पूछने वाले हैं, और जिस लड़के का लड़की का वो फोटे होगा, वो फोड़ देगा यार वहां पे. तो तुम्हारी मेहनत भी हो जाएगी और तुम प्रेस भी हो जाओगे कि आई एम फॉर गूगल, आई एम फॉर दिस कंपनी और दैट कंपनी, और हमारा नहीं हुआ यार उसमें. क्योंकि जिसका हुआ है उसका फोटे था यार, जो उन्होंने पूछा, और उसने फोड़ दिया पकड़ के, और तुम अपनी स्ट्रेंथ पे लड़े ही नहीं. तो अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और उसके हिसाब से जो कंपनी है उसमें अप्लाई कर दो. क्योंकि वैसे भी 1 1.5 साल 2 साल बाद तुमने वो कंपनी छोड़ देनी है. ठीक है? तो तो ऐसा नहीं होने वाला कि वो तुम्हें तो छाती से चिपका के रखोगे जिंदगी भर, वो होना ही नहीं है. तो जब होना ही नहीं है, 2 साल में तुमने कंपनी को स्यापा ही कर देना है, तो फिर उसको छोड़ो ना यार. ये सोचो तुम्हें क्या आता है.
और वो कैंपस में तुम्हें सबसे अच्छा आना चाहिए कि वो हाँ ये चीज रिएक्ट आती है तो इसको अच्छी आती है सबसे ज्यादा, इसे कराओ। और वो वाली कंपनी आ जाएगी एक दिन जो तुम्हें चाहिए होगी, और तुम उसमें अप्लाई करो और फोड़ दो और सेलेक्ट हो जाओ, खत्म होगी कहानी। सो डोंट चूज अ कंपनी, चूज अ स्किल सेट, बिकम अ मास्टर ऑफ इट, एंड देन सी ये हमारा स्किल सेट किस कंपनी में यूज होता है, उसमें अप्लाई करो और पेल दो। सर तो कभी प्लीज ये बेसिकली मत बनाना कि मैं गूगल में बैठना चाहता हूँ या क्योंकि वो प्लेसमेंट अच्छी देते हैं, वो लोगों को पैकेज अच्छा देते हैं तो उसमें बैठना और फोड़ना है, नहीं होता बाबा। मतलब मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बाकी किसी का हो जाए तो बात अलग है, बट डजंट हैपन दैट वे। सर बेसिकली सबको मतलब एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ मतलब बहुत लोग को स्टार्टअप शुरू करना है. Many people want to do startups and they even have ideas. But sir, work experience कितना मैटर कर जाता है? Like after engineering, like after BTech, आप डायरेक्ट to go and venture on a journey for a startup, or to apply to a company. प्लेसमेंट में बैठते हैं, पहले प्लेसमेंट में बैठो and एक work experience लो, let us understand what the market is and then we should go for it. क्या आपको क्या लगता है, which is See, better? your question says कि what after BTech? Yes. मेरा तो ये है कि why even BTech? Why even BTech? मतलब there are number of people I can actually give you references to who were dropouts of even their college, right, and started doing something. So it's not about कि कॉलेज कंप्लीट करने के बाद क्या कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ जब तुम्हें अपना मोजो मिल जाए, तुम्हें पता लग जाए कि क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो वो वही सवेरा है यार। उसमें प्रोफेशन का, टाइम का, एज का, कॉलेज का, स्कूल का, किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है उसमें, frankly. So a calling, let's say Ritesh Agarwal, when he started Oyo, he is not even a graduate from a college, right? And he is a billionaire that way, on paper at least, right? So I would not say that he should have completed his college, took up a job, would have seen the market, then would have started Oyo, and it's not the way around. See, I have seen kids with 10 years, 12 years of age, really entrepreneurial in their you see a kid who is selling balloons in a signal, right? He's more entrepreneurial than perhaps you, me, and all people who are here. He knows how to get the shit done, whether by crying or by anything, by emotionally blackmailing, where he gets the money out of your pocket. He's bigger entrepreneur than anybody who is on this call today, right? So is he a graduate from IIT? No, he's not even he's not even in school, right? So it is never a function of whether you graduate from a college, whether you join an organization and get some knowledge about how things works. No, it's always about the inner calling. It's always about that. Even if you're a graduate from a very pristine college, do you believe that people who come out from IIT and IIMs always make successful companies? No, they are bigger failures than success, right? So it's never about whether I should finish my college, take some experience, and then come back. It's always about if you believe in yourself, your capabilities, and you're ready to take risk, ready to bear all the brunt of rejections, ready to bleed for a very long time, get ridiculed, get neglected, then you are up for the game. And that has nothing to do with your college education, very frankly. I could have started before my college also. It's So just that I just got bogged down by the pressure that I had at that time. But I could have started even before completing my college, because I was making money while being in college. Like my brother's first installment for his IIM was given by me while I was in college. Right. So it has nothing to do. It has nothing to do with whether you complete your formal education or not. so true, sir. So true. मतलब what a beautiful answer. रॉकेट लगाए ना, तुम्हारे पीछे It रॉकेट really लगाए, hit me. मुझे कोई फर्क ही नहीं literally पड़ता, लगा अभी है, तुम कर ठीक है, जाओगे। कि मैं मेरी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ बैठ के कॉलेज में, ठीक है. But what a beautiful answer. It really hit me. मुझे और एक सवाल पूछना था सर. आज के टाइम पे सर नहीं, इसका सबको ये पता मतलब भी है. नहीं है, सुनो, इसका ये मतलब भी नहीं है कि सब हाँ. लोग जो है वो, इसका ये मतलब भी नहीं है Rocket कि सब छोड़ लगाएंगे। दें और सब छोड़ के निकल जाएं कि हाँ जी हाँ. इन्होंने बोल दिया। हाँ. नहीं, वो तो बिल्कुल भी हाँ. नहीं है बाबा। किसी को देख के तो साला करना मत कुछ भी, क्योंकि जिसने किसी को देख बात के सही करा है ना, है. उसने कुछ नहीं करा जिंदगी में।
जिसको लगा कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा ये चीज, मैं अगर ये चीज मैंने शुरू करा, मैंने कर लेना है ये वाली, वही कर पाया कुछ ना कुछ। लेकिन किसी ने मुझे देख के किया ना, वो तो बर्तन ही मान रहा होगा कहीं बेचारा। वो किसी को देख के मत करना प्लीज, किसी को भी। बात सही है सर, मजा आ रहा है। हाँ, तो नहीं, सर सबको पता है सर, अभी ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के हम्म, भैया सबसे बड़ा रुपया। तो सर ये रुपया आपको सैमसंग में हम्म, अच्छा मिल ही रहा था, ठीक है, कंपनी इतनी बड़ी है, वो हम्म, ऑब्वियसली इट इज सच अ बिग कंपनी, इट टेक्स गुड केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज आल्सो, ठीक है। तो व्हाट वाज द नीड, मतलब आपको क्यों राइट। ऐसा लगा कि सैमसंग से निकल के आपको एक स्टार्टअप ही करने का? यार it because I was very sure that whatever they are paying me is not worth my value. I was very clear of that I, like, they were paying me decent, right? And it's, see, it's again way of looking at things. For most of the people, their salaries are sufficient to sustain their lives, right? And I'm not saying doing a job is a derogatory in any sense. 99.999% people would end up becoming employees, right? And that's the way it should be also, right? Everyone becomes entrepreneur and everyone starts giving job, then who will take up the job? So that's also very wrong in saying that job is not satisfactory. Perhaps for most of the people, a good high paying job is the ultimate goal, it's the ultimate thing of their life, that they're sorted, right? But I knew that whatever they are, wherever I wanted to go in my life, Samsung will never be able to fulfill that, right? I frankly wanted to have 1,000 people team. Samsung will never let me build 1,000 people team and do some certain things of my own. Money is again a byproduct. I would not say I wanted to become a billionaire, that's why I started a company. Nobody does that. See, money is again a byproduct of what you do, good or bad. So if you do bad, you will lose money. If you do good, you will make money, right? So money is again a very byproduct. But what I wanted to do with my life was very important. So I knew that any job for that matter will not give me that opportunity to do things with my life. That's why I chose of opting it out and doing something of my own, so that I could fulfill that desire of having a big team, a big office, like a certain way of lifestyle I was inspired by. So those were the reasons. And money, see, everybody wants to make money, but it should be a byproduct of what you do. It should not be the sole purpose of your entrepreneurial choice. It should not be that. And it sounds very cliche when I say that it's not about money, it's not about money, you should not think about money. You should always think about making good money so that you can sustain that desire of becoming big. It's always required, right? If I hire you to today, I have to pay you certain amount of money, right? So the business should earn that much amount of money to sustain you to people, right? So you should always make money. Who is denying that? But that should not be your desire to do. You should arrange So it true, so from true. somewhere, from your customers, from investors, or from somewhere, so that you can use that money to hire employees like you, so that your dream of running a big company becomes true. So for True. me, it was always like that. I wanted to have a big office, a big team, and certain products which are used by everyone across the globe. So that was, and in the pursuit of doing so, I will definitely get rich one day. Perhaps not today, but one day. So many people in our college Yeah. want to have a startup, and many have idea. मतलब मैंने तो बहुत अतरंगी अतरंगी आइडिया सुने हैं लोगों से हमारे कॉलेज के अंदर, ठीक है, बट उनके Right. आइडिया के अंदर उनको कॉन्फिडेंस बहुत है, ये देखा है मैंने, ठीक है। बढ़िया। बट सर हाउ ये क्या प्रोसेस है जब हम आइडिया एक आइडिया को लेके उसको एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड स्टार्टअप में बदलते हैं, ठीक है, हाँ, तो मैं तो बताता हूँ यार। ये प्रोसेस बढ़िया, क्या? समझ गया तेरा। हाँ, मैं समझ गया तेरा। इन मोस्ट केसेस ना, मैं बताता हूँ ये इन मोस्ट केसेस दो चीजें हैं। पहली बात तो आपको लगता है आपका आइडिया यूनिक है, वो सबसे बड़ा मिथ है। सबसे बड़ा मिथ है वो कि आपका आइडिया यूनिक है, किसी ने नहीं सोचा होगा। 10,000 लोग होंगे आपके जैसे जिन्होंने सेम चीज सोची होगी, और उसमें से 1,000 होंगे जो उस पर काम भी कर रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है ना मेरा यूनिक है, मैं फोड़ दूंगा, ना बाबा ना, ऐसा तो है नहीं। पहली बात तो वो भ्रम हटा देना चाहिए लोगों को अपने दिमाग से, कि देयर आइडिया यूनिक इन सच काइंड ऑफ वे।
Abhishek, can you see me, hear me? Yes, actually there was a lag and Yes. उसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया. हाँ, same. It's all fine now, sir. Yeah, अभी अब सब सही है? सब बढ़िया है, अब सब सही है? बढ़िया है. हाँ, हाँ, अब हाँ, ठीक है। ठीक है। तो दूसरा मिथ, पहला मिथ क्या था? कि मेरा हाँ आइडिया यूनिक है। पहला मिथ ये था, और दूसरा हाँ. दूसरा मिथ मैं खुद ही भूल गया, मैं बताता हूँ। So, मेरे को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे फॉर माय आइडिया। सो दैट्स sir, actually there's a lot lag बहुत हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा. Hello sir. with the link, Hello sir. or let me switch. Maybe I switch another network. Sure, sir. Yeah, sure sir. Can you hear me or not? We can hear you. We can hear you sir. We cannot see you. Meanwhile, I'll ask the audience to come up with questions if they have some. Yeah. The audience has any doubts related to the code chef chapter, you guys can ask that too. Yeah. Please write in the comment section and जब तक सर आते हैं तब तक हम हाँ. आंसर करने की कोशिश करेंगे. We have a question. Can we have details of the contest? Well, the contest will start at 7 o'clock. We'll provide a link again. Yeah. Do join. Yeah, and we will be putting the link in the comment section of this and also in the description. Just see it. Uh, the contest is priced and the entry is free, and everyone try and take part in it. It is Okay. a good chance for you. Yes, sir. Okay. Continue, sir. ओहो भाई, नेटवर्क इन इंडिया जो भी है, चलो। हाँ तो दो मिथ की बात कर रहे थे हम. So there are two myths that every entrepreneur who is starting up has. One myth is his idea is unique, कि मेरे आइडिया से बेटर मैं पहली बार सोच रहा हूँ. दूसरा जो myth है वो ये कि they try to form a problem which is not a problem. यानी बहुत सारे लोग ना एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअली में प्रॉब्लम होती नहीं है. जैसे कि चांद पर टॉयलेट बनाना. फ्रैंकली क्या प्रॉब्लम है ये? अगर किसी कोई बोलता है कि माय आइडिया इज टू आई वांट टू स्टार्ट अ टॉयलेटरी इन ऑन मून. Yeah, very good idea, but who is going to use it, right? So most of the people, half of them, more than half of them, are trying to solve a problem which is not even a genuine problem. So so only those ideas
get really big, who are their personal problems an entrepreneur faces during, let's say for example, let's talk about Redbus. Like Hmm. how Redbus started, because the founder was not able to get any bus ticket when he wanted to go back during holidays to his hometown, right? So it was so unorganized that he thought that why can't we have an app using which we can do this, right? Like Oyo for that matter. So they started because there was no hotel booking kind of the experience was very broken with all these big players. So there was no personalized booking engine which could book in certain instances, right? And low budget hotels were not available, they were not there on the platform. So he thought that why not I standardize these low budget hotels and make them available for mass use, right? I think all these successful ideas generated because of some desire to solve a problem. There was an Hmm. existing problem which the entrepreneurs solved. But in most cases that I find, people, they are trying to create a problem first and solve it. Maybe just to impress somebody, or I don't know, but most of the time it's not even a problem. So my genuine advice to everyone who's listening right now is to never try to make a problem and then try to solve it. Always try from your personal experience, see what is missing, what could be done by a technology that can solve a pain point that you have right now. So the word is pain point. Solve a real pain point. Try to solve a real pain point, like payments right now in rural India. If you say payments and ATM is a very problematic space, right? So getting payments in rural India is still a problem. So if you form a company who can make lives of villagers in India, in rural India, easy in terms of transactions, you're going to get good numbers. Or even in today's time, sending money to outside India, the forex is very difficult, right? To Hmm. send money So to true. somebody in US right now is not very easy right now, right? So cross border payments, if you start a company who can solve border payments using maybe a blockchain or maybe any other format, your company is going to be huge, because that's a real pain point. Nobody is solving that pain point. Your company is going to be huge because that's a real pain point. Like payments right now in India is very difficult, right? So cross border payments, if you start a company who can solve that pain So, point, so, nobody is solving that. so there's an issue again. I think with Are your we stuck internet. again? I think so. Yes. Damn. But yeah, हाँ, बस बढ़िया है let's अभी. go ahead. हाँ, yes. Hmm. अरे फिर Yeah, ठीक next है. question. We can take up हाँ, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन ना. सर, एक सवाल है कमेंट सेक्शन से जो मैं लेना चाहूंगा. ठीक है. How to convince people and even investors that a startup has potential to grow? It is from Sakalya Mitra. Can you, Abhishek, can you come back? या मैं एक कमेंट सेक्शन से Abhishek, सवाल come लेना back, please. चाहूंगा. Hmm. या मैं एक कमेंट सेक्शन से सवाल लेना चाहूंगा. How to Please, convince please, please. people and even investor that a startup has potential to grow? This question is from Sakalya Mitra. So, Sakalya, there are two parts to your question. One is how to convince people. The second is convince investors. The answer to both of these is you don't need to. You don't need to. And it might seem very cliched again that I'm saying so, but convincing people, who are these people? If you're their parents, they eventually love you. That's why they are stopping you from doing idiotic thing like entrepreneurship. That's the only reason why they are stopping you, because they love you. They don't want to see you suffer, because it's a very roller coaster kind of a ride. That's the only reason why they are stopping you. It's not that they don't want to see you succeed in life, right? My parents were shit scared when me and my brother decided to leave plush jobs and start doing entrepreneurship, right? So they were actually scared. But when they saw the acquisition money, when they saw the company going from 5 people to 50 people, so they gained that confidence that it's not that bad, and things eventually are getting better. So apart from your parents, you don't need to convince any damn person in life, because they don't own you. They don't own any piece of your time, energy, money, whatever it is. So except for your parents,
You don't need to convince anybody, and your parents love you, so they will understand and they will let you try, because they have let you tried a lot many other things in life. They have let you tried a bicycle, right? They have given you cars or bikes to drive, right? Which is very, again, scary for a parent to give a young kid a motorbike, right? So they have given you, they have trusted you with your instincts. They will eventually love you, trust you. Except for that, give a shit rat ass to anybody who thinks that what you should do in your life. Second, investors. See, investors, get into the psyche of an investor. If I am an investor and you to start a company today, what is my motive? What is my motive? Do I want you guys to change the world? Damn it, I don't want you change the world, not change the world. Whatever you do with your life, I want my money to be doubled in 2 years or tripled in 2 years. That's my that's the basic premise of any investor. They just want to make X multiple of their money, of the investment that they have made, and take an exit. That's the sole motive of an investor, right? Whether your idea changes world, not changes world, anything, they are least bothered. And any investor is actually least bothered with what you are doing with your idea. What they see is, if I invest them in if I invest today in their idea, will I be able to make X multiple in 2 years and take an exit? If answer is yes, I will invest. Whatever you will be doing, I'll invest. Otherwise, I will never invest. So convincing investor is never this way around, that you go to an investor, pitch an idea. Nah, just show them the numbers that we are today at this point, and in the last 3 months we have doubled our customers, or we have doubled our revenues, or we have doubled our users, or tripled our users. Just show that trajectory, that देखो सर ये ऊपर जा रहा है, देखो ना, ये ना ऐसे उनको दिखाना होता है, सर देखो ये ऊपर जा रहा है, बस आप यहाँ पैसे डाल दो, इसका हम पहुंचा देंगे एक लेवल पर। इन्वेस्टर वहीं पैसे लगा देगा, तुम कुछ भी कर लो लाइफ में। सही बता रहा हूँ मैं। ये ना कि मैं टॉयलेट खोलूंगा मून पे, अगर तुम दिखा दो कि हाँ वो यूसेज हो रही है उसकी, और हो रही है उसकी यूसेज, रोज जाता है एस्ट्रोनॉट एक, तो वो लगा देगा कि चल ठीक है 10 और खोल ले यार, कोई टेंशन नहीं, यूज तो हो रहा है कम से कम। दैट्स द साइकी ऑफ एन इन्वेस्टर। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट यू आर डूइंग विद योर प्रोडक्ट, बिकॉज वो जानता ही नहीं है, उसने तुम्हारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी नहीं देखी, उसने तुम्हारा प्रोडक्ट भी नहीं देखा। वो भाई वो एमबीए का ग्रेजुएट है, उसको वैसे भी समझ में नहीं आ रहा तुमने लिखा क्या उसके अंदर, उसको सिर्फ चार्ट समझ में आ रहे हैं, उसको सिर्फ एक्सेल शीट समझ में आ रही है। हाँ, और वो सिर्फ ग्राफ देखने में इंटरेस्टेड है कि ये बाबा ये ऐसे रॉकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसका, बस। और वो तुमने दिखा दिया अगर, तो वो कन्विंस हो जाएगा, वरना तो तुम चाहे महात्मा गांधी के ले जाओ कन्विंस करने, वो नहीं होने वाला। सर बट जोमेटो तो 3 साल लॉस पे जा रहा है, 3 साल से। सर जोमेटो तो 3 साल से लॉस पे जा रहा है। 3 साल से नहीं भैया, 12 साल से लॉस में है। 12 साल से लॉस में है। आज तक 1 रुपया नहीं बनाया उन्होंने प्रॉफिट में। द डे दे स्टार्टेड टिल टुडे दे आर इन लॉस। बट सर इन्वेस्टर तो फिर भी दे रहे हैं ना पैसा। मैं बता good question. See, I also have taken some pool out of that money that investors have given them, so so वो गाली देना भी सही नहीं है, but see, I'll be very frank with you. What happens is, कुछ ना लॉन्ग टर्म आइडियाज होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म आइडियाज होते हैं। खाता बुक वाज फॉर दैट एग्जांपल, इज वाज अ शॉर्ट टर्म आइडिया, ठीक है ना, कि इसमें ना एकदम से ओवरनाइट या दुकान या खाता बुक में पैंडेमिक एक राइज आ गया, तो इन्वेस्टर्स को लगा कि ओहो ये तो भाई ये तो छक्के मार देगा आइडिया, और लगा दिया उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर, जबकि मीट नहीं है उसमें इतना। खैर वो दैट्स अ सेकेंडरी, बट Zomato and Swiggy, they are long term ideas. वो क्या है, they will eventually make money, let's say in 20 years of their formation. Reason being, उनका आइडिया ये है कि कल को अर्पिता और अभिषेक जब अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगे, तो वो शायद घर पे खाना बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि घर पे खाना, क्योंकि दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, और दोनों में एक वो भी तो चल रहा है ना कि मैं क्यों बनाऊं तू बना, तू मैं क्यों बनाऊं तू बना वाला भी तो चल रहा है ना सीन, कि ये व्हाई इज इट ओनली माय रिस्पांसिबिलिटी। राइटली सो, सही भी है वो, मतलब सही भी जा रहा है वो। तो उसमें क्या होने वाला है कि बाहर से मंगा लो यार, बाहर से खाएंगे हम। So in today's time are okay eating out, right, and ordering from outside. So if you take a statistics of Thailand में kitchens नहीं होती घर में, Thailand में kitchens ही नहीं है घर पे। क्यों? क्योंकि वो जो बाहर से खाना मंगा रहे हैं ना, वो that is equally good
एज अ होम कुक फूड। तो उनके जो होम शेफ्स है बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनसे ऑर्डर कर लेते हैं। तो वो तुम्हारी मम्मी ने बनाया वैसे ही खाना आ रहा है घर पे, राइट? सो व्हाई डू यू हैव टू कुक एट होम? जब तक इंडिया उस स्टेट में नहीं पहुंचता कि घर, आप जो मिलेनियल्स हैं, आपके जैसे जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने एक टिफिन सर्विस ले रखी है, जो कि वो गंदी वाली टिफिन सर्विस नहीं जो आज की डेट में मिलती है, बट एक अच्छी क्लाउड किचन से आपको आ रहा है, अच्छा खाना आ रहा है, हाइजीनिक है, न्यूट्रिशियस है, उसमें ये ऑर्गेनिक चीजें यूज हुई हैं, इट्स लाइक अ होम कुक फूड ओनली। सो व्हाई विल यू cook at home? You will stop cooking at home because you are getting equally good food from outside. वो उस विचार की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि one day when Indians will stop making food at home and will start ordering from outside, then this ecosystem will work. But कब तक काम करेगा वो? कब कब होगा वो चीज? वो होगी काफी टाइम बाद। तब तक कंपनी सस्टेन करनी है। अब कंपनी सस्टेन करने के लिए चाहिए पैसे चाहिए। अब जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा कैश आउट नहीं कर सकते, वो फंसे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि यार चलो इसमें और लगाओ पैसे, फिर और डालो इसके अंदर, और नए इन्वेस्टर ढूंढ के लाओ। देयर आर 50+ इन्वेस्टर्स इन जोमेटो, जोमेटो एटलीस्ट 50 से ऊपर इन्वेस्टर हो गए, क्योंकि पुराने वाले बोले हमारी लिमिट आ गई भाई, हमने लगा दिया 100-150 मिलियन यार, अब अब इसके ऊपर नहीं लगा सकते, और पकड़ के लाओ। तो फिर वो और बाहर से ले आते हैं पैसे, इधर से ले आते हैं, क्योंकि ये सिस्टम चला के रखना है। अभी प्रॉफिट उनका निकलेगा बहुत टाइम बाद, जब इंडियंस एक्चुअली में बाहर खाना शुरू कर देंगे तब निकलेगा उनका प्रॉफिट। तो तब तक कंपनी चलाओ, यही चल रहा है उनका। बट अगेन मतलब, see, I never wanted to make such a kind of a company. I wanted to become a Zoho or a Freshworks, who will make money from day zero by selling their software, right? कि मेरा सॉफ्टवेयर यूज करो, मुझे पैसे तो खत्म हुए ना काम, तो मैं कम से कम चला लूं। बट जोमेटो स्विगी का केस थोड़ा ट्रिकी है, मतलब they will take a lot more time to start making profit. क्या बात है सर, मजा आ रहा है। Okay. Yes. So Prakhar Sinha has a question that how your transition was from a college student to being a working professional. What do you think today's professionals lack? Professionalism. वही lack होती है, professionalism. Like today's professionals really lack professionalism. They believe that they're professionals, but they are just see, you would feel that I am like an old uncle ranting about youngsters today. But I'll be very frank with you. There are a lot of youngsters today I find are really delusional, with a sense of entitlement because of them being born in this age and time. So what I believe is today's generation gets boggled by a lot of small things. They are very sensitive. They gets boggled by a lot of small stuffs as well, which in my time and in my parents time were just under the carpet, right? It was just way of life, and the hardship was a way of life, right? And nobody bothered that you have to do certain things hard way. There is no shortcuts, which in today's time I feel a lot of people who are graduating from colleges lack. They lack patience. They want everything right now, just on the plate, because they feel entitled, that they are entitled for that kind of a treatment, which in real world doesn't work, right? Which in real world doesn't work. So when graduates in today's time, pampered by their parents for everything in life, starting from playstations to fancy vacations outside India, once they land in real world and then they join an office and then they see politics for the first time in their life, they see see difference of what they have been brought up till that date, and then it breaks them from inside, and then they start feeling dejected. They start feeling that he's not respecting me. इन टुडेज टाइम इवन हम 5 साल के बच्चे को आप खा लो, प्लीज खा लो, हमारे पास चमाट मार के खाना खिलाती थी मम्मी की, खा भैंस क्या खा खाया क्यों नहीं, समझ रहे? तो वो वाली से So आ गया है true, यहाँ पर, राइट? अब so वो आ true. चुका है, बच्चे मेरा खा ले, तो वो साला बचपन 5 साल की उम्र से वो एंटाइटल्ड फील कर रहा है कि उसको भैया पापा की परी बना के रखा हुआ है और मम्मी का राजा बेटा ही बना हुआ है वो। फिर जो जो रियल वर्ल्ड में बेचारा निकलता है ना, उसको इतनी बचती है, उसकी इतनी बजाई जाती है कि उसको लगता है ये क्या हो गया, मैं तो अब तक तो मैं सही चल रहा था यार, ये दुनिया पलट कैसे गई एकदम से। एंड देन सो उनको लगता है कि देन दे बिकम अ लिटिल, आई वुड इन माय टर्म्स आई से, सोफिस्टिकेटेड एसोल्स बन जाते हैं। फिर वो किसी काम के नहीं रहते, खुद के भी और दूसरे के भी। वो बहुत ज्यादा हो रहा है आज के डेट में, आई डोंट नो व्हाई, कि वो बहुत ज्यादा होने लगा है।
तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज के प्रोफेशनल में प्रोफेशनलिज्म की ही कमी हो गई है। इट हैज कम टू दैट। सो पेशेंस रखो यार। नोबडी, नथिंग कम्स इन योर लाइफ इजी, नथिंग विल एवर कम इन योर लाइफ इजी। वो 1.001% लोग होते हैं जिनका थोड़ा इजी हो जाता है, दे आर लकी लॉट, उनको छोड़ देते हैं। बट आपकी लाइफ में हार्डशिप रहेगी ही रहेगी यार, और वो बहुत ग्रेशियसली एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। उसमें आपको अपना पेशेंस दिखाओ, ग्रेस दिखाओ, एंड देन यू विल बिकम सक्सेसफुल एंड बिग एंड रियली। फिर आपको लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे, आप भी दुनिया को एक अलग नजर से देख पाओगे, और वो दैट्स द वे ऑफ लाइफ। मतलब मेरे को तो अभी तक इतना ही समझ में आया, बट वही एक वे ऑफ लाइफ। ह्यूमिलिटी नहीं है लोगों में यार। मतलब मैं एग्जांपल दूं, अगर अच्छा लग रहा है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छे वाला। अरे Sure, व्हाट sure, दो दो sure. हैपेंड सर, इज कि बिंदास। मेरे को ना एक स्टोरी सुनने में आई कि एक अभी पेरेंट्स, मतलब मैं अपने स्कूल के टीचर से बहुत इंटरेक्ट करता हूँ, बिकॉज मैं एलुमनाई एसोसिएशन में स्कूल के भी कॉलेज के भी बहुत एक्टिव हूँ। तो मेरे को मेरी टीचर बता रही थी कि एक पेरेंट्स आ गए स्कूल में लड़ने। अब देखो, तुम्हारे साथ भी हो सकता है वो, मैं हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स ने भी किया हो, बट आई डोंट नो, तुम भी तो अभी अभी कॉलेज में ही हो। तो एक बच्चे के पेरेंट्स लड़ने आ गए स्कूल में कि हमारा बच्चा स्कूल बस में आज खड़े हुए आया है, खड़े होके आया है वो, उसको सीट नहीं, सही सीट नहीं मिली। हम पैसे पूरे देते हैं बस को, बस तुम्हारे स्कूल की बस को, तो तुम्हें इंश्योर करना है कि वो बैठ के आए। ये खड़ा होके कैसे आया है बच्चा हमारा, उसके लिए वो लड़ने चले गए स्कूल। अब वो जो टीचर ने मुझे बताई, अब मैं सोच रहा हूँ यार, वी वर इन 80s एंड 90s, हमें बैठ के आना मिल जाए हमारे लिए होता था कि गनीमत है यार, बैठ के आए हैं भाई, क्या बात कर रहा है, आज तो मजा आ गया, बैठ के आए हैं भाई, ठीक है। वो, और हमारे पेरेंट्स को मैं आके बोलता ना, मम्मी मैं खड़े होके आया हूँ बस में, मम्मी कहती ऐसा है, ये चप्पल कहाँ है, चप्पल मेरी, चित्र बजाऊं उसके मैं, ठीक है, क्या हुआ, क्या पूरे दिन तो खेलता रहता तू, बाहर खड़े होके आ भी गया तो क्या दिक्कत है। बट अब सी, इन टुडेज टाइम दैट किड कंप्लेन टू द पेरेंट एंड सेइंग कि मैं आज खड़े होके आया हूं, एंड पेरेंट्स मेड हिम फील एंटाइटल्ड कि हाउ कैन यू कम, वी पे मनी फॉर योर सीट इन द स्कूल बस, चल स्कूल। उसको स्कूल लेके गए, वो टीचर को डांट पिलाई, उन्होंने, टीचर भी सॉरी बोल रहे बेचारे कि नहीं नहीं, हम नेक्स्ट टाइम विल इंश्योर दैट योर किड गेट्स अ सीट। उस बच्चे के दिमाग में हमने क्या प्लांट कर दिया, आप वो सोचो। वो प्लांट हो चुका है कि मैं अब कुछ भी बोलूंगा ना लाइफ में, मेरे को मिलेगा वो। उसने वो, उसको वैसा ही हो गया है। और ये अगर उसकी पूरी जिंदगी चलता रहा फॉर गुड 17 years और 18 years ऑफ हिज लाइफ, ही विल बी डैम्ड इन द रियल वर्ल्ड। बहुत थप्पड़ पड़ेंगे बाहर निकल के, फिर क्या होगा उसका, वो टूट जाएगा। तो हार्डशिप्स, ह्यूमिलिटी, ग्रेशियसनेस, ये सब सिखाओ यार थोड़ा। ये हमारे को है ना, एज पेरेंट्स में मेरे बच्चों के मैं बोलूंगा, आप खड़े हो गए यार, साले खड़े हो गए, इसको खड़े हो गए भेजो, कम से कम इसको पता लगे हार्डशिप होती क्या है। सही बात है सर, एक एक आपके जवाब जो है तीर की तरह बुलजाई, लिटरली बुलजाई हिट कर रहे हो। Yeah. So in this rapidly, a question from बहुत Sumedha बढ़िया यार, Punia. अपने को भी ना इसलिए बोल रहा हूँ। In this rapidly हाँ, growing world, the dependence on AI and computers is increasing day by day. Do you think that competitive coding is required for entrepreneurship too? So it's a wrong question, I would say. It's not a correct question to put it in words, because is it required in entrepreneurship? Nothing is required in entrepreneurship. It's just the fire in your belly that is required. So competitive programming, not competitive programming. How many companies do you know where the founders are really good coders? Nah, it is not a function of how good coding you can do. No, obviously no. How passionate you are, how much perseverance you have, how much stones you can take on you, how much तुम कितने थप्पड़ बर्दाश्त कर सकते हो, उससे डिफाइन होता है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से डिफाइन नहीं होगी एंटरप्रेन्योरशिप, कभी भी नहीं होगी, आज भी नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी। हाँ, जो फाउंडर्स टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट यूज लॉन्च करना चाहते हैं और वो खुद कोडर्स भी होते हैं ना, वो चीजें थोड़ी जल्दी कर लेते हैं। वो थोड़ी, उनका वो बेटर हो जाता है कि बिकॉज दे अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट दैट दे आर मेकिंग। तो उनको ना, उनका इंजीनियर बेवकूफ नहीं बना पाता। जैसे जो मैनेजरियल लोग कंपनी शुरू करते हैं और इंजीनियर्स हायर करते हैं, उनको इंजीनियर वो पप्पू बनाते हैं कि सर ऐसे ही होता है, सर ये तो बग आ गया, हमें तो पता है ऐसे ही होता है ये। अगर तुम कोडर हो तो तुम बोलोगे ऐसा है, सुन बना मत, मुझे पता है ये गलती तेरी है, साले सही कर इसको, ठीक है। तो वो उतना ही एडवांटेज होता है इफ यू आर अ टेक फाउंडर एंड यू आर लॉन्चिंग अ टेक कंपनी। बट इफ यू आर अ टेक फाउंडर एंड यू आर लॉन्चिंग अ नॉन टेक कंपनी, कल को तुमने बर्गर की दुकान खोल ली और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि बर्गर में होता क्या है, क्या वो बन कैसे बनता है और वो टेम्परेचर क्या होता है, उसमें कोडिंग क्या कर लेगा, राइट? टुमारो इफ यू स्टार्ट अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, व्हाट विल कोडिंग डू इन दैट?
So the question is not correct in framing कि entrepreneurship के लिए competitive programming कितनी जरूरी है. Entrepreneurship के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है except for your desire to do it. उसके अलावा कुछ जरूरी नहीं है. हाँ, competitive programming नौकरी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है. So if you want to aim for a job, then you can at least show कि देखो, see I am doing this and I do it better. यार वैसे भी मैं frankly बताऊं, as an employer मैं बंदे में क्या देखता हूँ, मुझे पता है वैसे भी जो ये सीख के आया, जो fresh graduate होता है कॉलेज से, उसको करना पड़ता है डी ट्रेन और उसको करना पड़ता है रीट्रेन. तो मेरे को जो उसने कॉलेज में 4 साल सीखा होता है, पहले वो भुलाना होता है कि भूल जा, सब बकवास सीखा तू, ठीक है ना, और ये सीख अब तू, ये समझ अगले 3 महीने में, और ये डिलीवर करना है, राइट. तो वो जब मैंने, और सारी कंपनी ऐसे ही करती है, आपको सारा डी ट्रेन करा देती है, फिर रीट्रेन करके आपको अपने हिसाब से तैयार करती है कि हाँ भाई ये अब तेरे को, दिस इज द लाइन दैट यू विल फॉलो, राइट. तो उसमें आपको, मैं जो चॉइस करता हूँ बंदे की ना, वो ऐसे करके करता हूँ कि हाँ इसने अपने जो टास्क एट हैंड था उसको कितना सीरियसली लिया है. जैसे लोग बोलते हैं कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट होती है क्या कॉलेज में, कि परसेंटेज कितनी अच्छी है. ऑब्वियसली यस एंड नो. नो इसलिए कि इफ यू नो योर स्टफ, देन परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वैसे भी कॉलेज एजुकेशन हमारे टाइम में तो रेलेवेंट ही नहीं थी. मतलब जो हमारे को इंडस्ट्री में जाके परफॉर्म करना था और कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा था, वो साला उसका लिंक ही नहीं था कुछ. तो वैसे भी कॉलेज में चाहे 60% आ जाए, लेकिन आपको आपका प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट फोड़ ही दोगे जाके, या कुछ और कंपनी फोड़ ही दोगे, राइट. तो परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है. इट बिकेम अ मिनिमम क्राइटेरिया. 60% हो तो सारी कंपनीज में एलिजिबल हो जाओगे, तो कम से कम वो कर लोगे टिल दैट टाइम. तो ये जो पार्ट है ना कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कितना हेल्प करती है, वो सिर्फ ये जज करने में हेल्प करती है कि आप अपने काम को लेके कितना सीरियस थे. तो अगर कोई टॉपर है, तो मुझे पता है यार वो अपने टास्क एट हैंड को लेके ना सीरियस था, तभी वो टॉपर है. कि उसको लगा कि मेरा काम क्या है एज अ स्टूडेंट, एजुकेशन मेरा काम है, एग्जाम देना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, वो मेरा धर्म है एज अ स्टूडेंट. तो उसने अपना धर्म बहुत अच्छे से निभाया. तो मुझे पता है कि ये स्टूडेंट सीरियस है. अगर कल को मैं इसको कुछ दूंगा ना, तो ये इसको सीरियसली लेगा, क्योंकि इसने एजुकेशन भी सीरियसली ली. जो उसका टास्क एट हैंड था ना, वो उसने सीरियसली लिया. परसेंटेज तेरे कम है तो मुझे लगेगा कि देख इसने सीरियसली तो लिया नहीं था, तो अब मैं स्किल पे जज करूंगा, जैसे कि चल भाड़ में गया, जो टास्क एट हैंड था उस पर तो मजे ले लिया इसने, लेकिन स्किल अच्छी है तो मैं स्किल पे ले लूंगा. अगर दोनों ही बेकार हैं, परसेंटेज भी कम है, स्किल भी नहीं आती है, तो फिर टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, फिर कुछ नहीं होगा. सो इफ यू आर गुड इन बोथ, दैट यू आर टॉपर आल्सो एंड यू नो द स्किल आल्सो, देन आई विल पे यू हायर. वो भी हो जाएगा कि तुम मेरे लिए एसेट हो जाओगे डे वन से. तो आपको जो आपका जो धर्म है, आपका स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट धर्म है इस समय नंबर लाना या पढ़ाई करना या कुछ स्किल लेना. अगर आप वही पूरा नहीं कर रहे हो, तो फिर मैं भी आपको वैसे ही जज करूंगा. जब आपने उसको 4 साल सीरियस नहीं लिया, जो आपका टास्क था, जो आपको 4 साल करना था, तो आप कंपनी में आके भी ना मजे लेने वाले, फिर पेंट्री में मिलोगे या नीचे सुट्टा पीते मिलोगे, क्योंकि वो भी आप फिर सीरियसली नहीं लेने वाले. तो मेरे लिए जजमेंट क्राइटेरिया वो हो जाएगा. एंड दैट्स अ पर्सनालिटी जजमेंट क्राइटेरिया. फ्रैंकली नंबर्स और ये सब चीजें जो होती है ना, ये कंपनी आपकी पर्सनालिटी जज करने के लिए ही पूछती है कि कितने नंबर्स आए, ताकि वो पता लगा सके तुम कितने सीरियस थे अपने काम को लेके. कॉलेज में भी उतना ही है वो फैक्टर, उससे बियॉन्ड नहीं है. Next question. Okay, Aman has a question. So, what do you suggest? Should we go for placements or higher studies immediately after our graduation? Whatever you feel like, do that. So if you believe that you want to start a job, और तुम्हें लगता है कि वो जॉब तुम्हें करनी चाहिए, तो do that. Higher studies again calling के ऊपर होता है यार. Frankly मुझे लगा था कॉलेज एजुकेशन के बाद कि मेरा एजुकेशन हो गया बाबा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता मैं करूंगा ही नहीं, मैं अपना ही कुछ कर लेता हूँ लाइफ में. तो मैं उस डायरेक्शन में निकल गया. लेकिन बहुत सारे हमारे में ऐसे थे जिन्होंने एमएस और मास्टर्स और एमटेक करने निकल गए, क्योंकि वो उनकी कॉलिंग थी यार. उन्हें लगा कि नहीं, दे स्टिल वांट टू लर्न, दे स्टिल वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन ऑफ लर्निंग. तो उनकी लर्निंग चल, कई लोग पीएचडी में भी चले गए उसके बाद, कि वो डॉक्टर्स भी बन गए, पीएचडी हो गई उनकी. तो यार वो ना एक पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस होती है. अगर आपको लगता है आपकी ग्रेजुएशन के बाद यू स्टिल हैव दैट क्वेस्ट ऑफ लर्निंग एंड यू स्टिल वांट टू गो डीपर इनटू द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड, देन ऑब्वियसली गो फॉर मास्टर्स. बट ये मत करना कि मैं मास्टर्स कर लूंगा तो नौकरी बेटर लग जाएगी. वैसे मैं फ्रैंकली बताऊं, ये थोड़ा ना रिवर्स केस है. मास्टर्स वालों की नौकरी उतनी ज्यादा नहीं लगती जितनी बैचलर्स वालों की अच्छी लग जाती है. और क्या करते हो आप, वो मास्टर्स के 2-3 साल आप वेस्ट भी कर देते हो, तो वो जो कमा सकते थे आप, वो नेगेटिव हो जाते हैं आपके, वो जीरो हो जाते हैं. तो वो कमाई आपकी हो सकती थी जो वो लॉस हो जाती है. प्लस मास्टर्स और बैचलर्स इन मोस्ट कंपनीज ना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं. मतलब सैलरीज में ना ऐसा नहीं होता कि बहुत अथा फर्क पड़ जाएगा सैलरीज में. तो फिर उसका प्रेमिस सिर्फ एजुकेशन ही रह गया है. मतलब अगर आप अच्छी एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मास्टर्स करें, बिल्कुल करें. और मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ मास्टर्स पर ना रुकें, आप आगे भी जाएं, पीएचडी करें, प्रोफेसर बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, आप उस डायरेक्शन में जरूर जाएं. लेकिन अगर आपको लग रहा है सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए मास्टर कर लें तो हमारी नौकरी बेटर लग जाएगी, स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ,
मास्टर्स और बैचलर्स की नौकरी के उसमें सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता और उनकी ट्रेजेक्टरी भी सेम ही होती है। फ्रैंकली एमबीए करने वाले लोगों की नौकरी बैचलर्स बीटेक करने वाले लोगों से कम में लगती है, कम में लगती है, मैं आज बता रहा हूँ। एवरेज है वो। आईएम आईआईटी आईएम में जो आईआईटी में करने के बाद उसकी जॉब लगी होती है ना, वो आईएम करने के बाद कम हो जाती है। ये सिनेरियो है, ये रियल स्टैटिस्टिक्स है। बढ़िया। Next question. When you were in college, how did you end up managing your day? My question is Ankit Sabya. Just like any youngster in a college. So 70% of the time is masti. That's bound to happen, and you should explore your talents and your hobbies and stuff like that. So I explored music during that time. So I was involved in a lot of this kind of an activities. So I explored music, I explored romance, I explored a lot of things, and that should happen. Yeah, if I ask you, Abhishek and Arpita, that you should not fall in love with people, it's an idiotic statement to make. Why should not, and why will you not? Because hormone is at the peak, and you are raging with hormones right now, and then you say you close your eyes. Why? It won't. It can't happen. So it's a typical thing for any youngster at your age, 18, 19 years of age, to explore a lot of things. मन भटकता है, मन बहकता है, इधर उधर जाता है, जाने दो उसे, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक चीज ना, एक चीज जिसको बोलते हैं कि ये चीज मेरी सीरियस है लाइफ में, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, वो जरूर एक पकड़ लेना। कि वो तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हें जॉब है अगर, तो जॉब को सीरियसनेस पकड़ लेना, बाकी टाइम मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं है। क्लास में करनी है अगर, अटेंडेंस मेंटेन करनी है, एग्जाम तुम्हें देना ही है अगर, पास होना है, तो वो तो हो जाती है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स लाइफ की, वो तो तुम्हें करनी ही है ना यार। वो तो तुम करोगे ही, एग्जाम दोगे, पास होगे, ये सब चीजें होंगी होंगी, राइट। एक चीज जरूर पकड़ लेना अपनी लाइफ में जो तुम्हें लगता है कि दिस ड्राइव्स मी, वो ढूंढ लो प्लीज। अगर वो नहीं मिल रही है ना, किसी को नहीं मिल रही है, तो वो ढूंढ लो। अगर वो स्पोर्ट्स भी हो सकती है यार, आई डोंट नो, वो स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं कई लोगों की। जैसे सुशांत सिंह राजपूत मेरा सीनियर था कॉलेज में, ठीक है, तो वी न्यू हिम, ही वाज 2004 बैच, आई वाज 2004 में एंटर हुआ था, मैं 2005 में एंटर हुआ था। तो एंड इन कॉलेज ही वाज अ ग्रेट डांसर, ही वाज अ ग्रेट एक्टर। तो उसको देख के लगता था, सुशांत को देख के लगता था कि हाँ ये जाएगा उसी डायरेक्शन में, और थर्ड ईयर के बाद उसने छोड़ भी दिया और फिर वो चला भी गया। तो दैट वाज हिज कॉलिंग, राइट, बट ही आइडेंटिफाइड हिज कॉलिंग। कई लोगों की मैं बताता हूँ, मेरे जो बैचमेट्स हैं, उन्होंने जैसे जो रूम्स या जोस्टल, तुमने कभी सुना हो, जो रूम्स करके एक थी जिन्होंने ओयो को बेच दी थी कंपनी, तो दे वर माय बैचमेट्स, दे फॉर्म दिस कंपनी। सो उनको देख के लगता था कि हाँ दे विल गो इन दैट डायरेक्शन ऑफ फॉर्मिंग देयर कंपनी, एंड वो लग रहा था उनको। तो हर एक की ना एक कॉलिंग होती है, आप वो कॉलिंग जरूर पहचाने, उस कॉलिंग को एक जरूर पकड़ लें आप। बाकी टाइम मस्ती कर सकते हो तुम, जो बाकी बचा टाइम है, और वो तुम करोगे भी। मैं कह भी दूं अंकल की तरह कि नहीं करनी बेटा, पढ़ाई करो, नहीं होने वाला वो तुम करोगे। वो पढ़ाई भी तुम रात को ही करोगे एक दिन एग्जाम से पहले। तो मेरे कह देने ना कह देने से कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो बट माय एडवाइस टू यू इज, एक चीज प्लीज पकड़ लो, कुछ भी हो सकती है वो, जिसको तुम बोलते हो इसको मैं पकड़ के शायद लाइफ टाइम चल सकता हूँ, अगर ये मेरे को लाइफ टाइम मिल जाएगी तो आई कैन डू इट। इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी स्पोर्ट्स, इन मोस्ट लाइकलीहुड इट शुड बी योर प्रोफेशन, कि ये मेरे को करना है। जस्ट फाइंड दैट प्लीज एंड देन फॉलो इट। बाकी टाइम मस्ती। Sir, we'll move on to our last question. Acha. Yeah. So this is again by Professor now. What are your 3 tips that you would give to an undergrad student? Make mistakes. First tip, make mistakes. Do as many mistakes as possible, जितना कर सकते हो, because you will experiment. You will experiment with a lot of things. मैंने अपने कॉलेज टाइम में बोलूंगा, मैंने कितना कुछ स्टार्ट किया, बंद किया, ट्राई किया, लेकिन उससे ना क्या होता है, देख, हैव यू सीन अ पेंडुलम? पेंडुलम गोज बोथ वेज, दिस वे दैट वे, फेलियर एंड सक्सेस, दैट्स अ पेंडुलम ऑफ योर लाइफ, राइट। यू ट्राई एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में ना तुम्हें पता लग जाएगा, कि तुम्हें एहसास हो जाएगा कि ओके दिस इज वन थिंग विच इज स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड विद मी, विद माई इनर सेल्फ, ठीक है ना। तो डू एज मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन योर लाइफ एज पॉसिबल। इफ यू बिलीव यू वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन, गो ऑन स्टेज, फक इट अप, बर्बाद कर दो बहुत ही। तुम्हें लगता है कि तुम कॉमेडियन बन सकते हो और तुम एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हो, तुम चढ़ जाओ स्टेज के ऊपर, चाहे वहां पे तुम्हें अंडे पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार करोगे, 2 बार करोगे, जब तुम 10वीं बार करोगे ना, यू विल बी वे बेटर देन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट। तो पहली बात है, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपनी चीज को लेके आप करो। अगर आप
अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप जितने कंपटीशन हो सकते हैं ना आप अटेंड करो, ठीक है ना। उसमें बहुत घटिया परफॉर्म भी करोगे, आप लास्ट भी आओगे, लेकिन करते 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 ना जब आप एक टाइम पे पहुंचोगे, जब आप 10वां कंपटीशन लड़ रहे होगे ना, यू विल बी सीरियस, योर रोबोट विल बी वे वे बेटर देन अदर्स, तो तुम उसमें बेटर हो चुके होगे, क्योंकि वो प्रैक्टिस का खेल है, वो सारी चीजें जिंदगी में प्रैक्टिस का ही खेल है। तो पहली टिप एक्सपेरिमेंट एज मच एज पॉसिबल टू फाइंड योर इनर कॉलिंग। जो मैं बोल रहा था ना पिछले सेंटेंस में कि इनर कॉलिंग ढूंढने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा हर डायरेक्शन में। पहली टिप ये। दूसरी टिप हम्बलनेस। प्लीज कुछ भी ग्रांटेड नहीं लेना लाइफ में, क्योंकि लाइफ ग्रांटेड नहीं है। यहाँ से बाहर निकल के बहुत थपेड़े हैं, जूते पड़ेंगे, आपके मन की बात नहीं होगी, ठीक है ना। ये मान के मत चलना कि वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर यू टू कम आउट ऑफ योर कॉलेज एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। हैज हैपेंड विद नो वन। यहाँ यहाँ बड़े से बड़े लोगों को बर्दाश्त वो नहीं किया जाता, मतलब वो उनकी बात नहीं सुनी जाती। मोदी जी भी है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उतनी ही ऑपोजिशन भी है उनकी, राइट। तो कभी भी लाइफ इजी नहीं होने वाली, इसलिए ह्यूमिलिटी पकड़ के चलना, आपको ह्यूमिलिटी रखनी है। कुछ भी हो जाए, प्लीज डोंट बैड माउथ अबाउट पीपल, डोंट बैड माउथ कि उसने ऐसा कर दिया उसकी वजह से ये हुआ है। नो, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिट दैट यू डू इन योर लाइफ, यू आर दैट। सो ओन इट एंड humble। दूसरा पॉइंट। तीसरा, ऑलवेज हैव फेथ इन व्हाटएवर यू डू। क्योंकि तुमसे ज्यादा फेथ अगर अगर किसी और कोई तुम्हें ही डाउट है, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें किसी चीज पर डाउट है, इट विल नेवर फ्लरिश। सेल्फ डाउट जो होता है ना, वो किलर होता है, क्योंकि आप हर एक फेलियर पे ना सेल्फ डाउट ले आओगे कि अच्छा ये तो मुझे पता ही था कि चलना नहीं था ये तो। हैव फेथ इन यू, ठीक है। और जिसके पास अथाह फेथ होता है ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाता है। तो पहला टिप है एक्सपेरिमेंट एज मच एज पॉसिबल। दूसरा, प्लीज हम्बल रहना, ह्यूमिलिटी रखो लोगों के प्रति, अपने सबॉर्डिनेट्स के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रति, अपने जो लोग तुम्हें रिडिक्यूल करते हैं उनके अगेंस्ट भी, क्योंकि वो भी तुम्हें कुछ सिखा के जा रहे हैं इवेंचुअली। अगर तुम उनकी बात सुनो ना, उसमें भी कुछ ना कुछ तुम्हें एक सार मिल जाएगा कि हाँ ये बात तो उसने सही कह दी है, ये पकड़ लेता हूँ। तो ह्यूमिलिटी मत छोड़ना। और तीसरा, अथाह कॉन्फिडेंस रखो अपने अपने उसके ऊपर कि मैं कर लूंगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा लाइफ में, ठीक है। तो वो मजा आ गया से क्या सर, होता है ना, अच्छी कहावत कि कभी तुमने, कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जैसे पटाखे की लड़ी होती है, उसके बीच में से निकल जाते हैं, ठीक है ना, कि वो उसमें से बीच में से निकल जाता है, क्योंकि ना उनको अथाह कॉन्फिडेंस है अपने, या उसको ट्रस्ट है कि नहीं होगा मुझे कुछ, तो वो उससे भी पार हो जाते हैं, ठीक है ना। इसकी इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इफ यू हैव टाइम आई Yes, कैन sir. टेल Sure, यू sure. अ 2 मिनट यस स्टोरी सर, यस सर, इन दिस एज फॉर वेल। श्योर। है तो मैं बताऊं। अरे बताओ सर, बताओ, कोई तुमने पाबंदी वो नहीं है। स्टोरी सुनी है कि दो बच्चे होते हैं और वो एक गांव के किनारे, एक कुएं के पास, गांव के किनारे पे एक कुआं होता है, वहां पे जाते हैं। एक स्टोरी है, चलो मैं सुनाई देता हूँ। सो दो बच्चे होते हैं, ठीक है, एक छोटा होता है और एक थोड़ा बड़ा होता है। तो वो अपने गांव के किनारे ना एक एक कुएं के पास खेल रहे होते हैं। तो जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो गलती से कुएं में गिर जाता है। तो जो छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा जो है वो कहीं से कुछ रस्सी वस्सी लेके आता है, वो अंदर फेंकता है, वो बच्चा बड़ा बच्चा पकड़ता है और ये छोटा बच्चा जो है उसे खींच खाच के ऊपर ले आता है, ठीक है। फिर दोनों बच्चे जरा गांव में जाते हैं और गांव में जाकर अपनी स्टोरी बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा कुएं में गिर गया था, ये तो इसने छोटू ने इसको बचा लिया, ये बचा के ले आया इसको। तो सारे लोग जो है, वो सारे लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं कि यार ये छोटा सा बच्चा इसको इतने बड़े बच्चों को कैसे निकाल सकता है जी, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, इसमें कहाँ इतनी जान है, ये वो। तो छोटे बच्चे से पूछते हैं कि तूने सही में निकाला? तो बोलता हाँ मैंने निकाला इसको। तो वो सारे हैरान होते हैं। तो एक एक बुजुर्ग सीखे हुए लोग वो आके बोलते हैं कि सुनो ऐसा है, तुम्हें पता है ये इसको क्यों निकाल पाया? क्योंकि वहां पर इसे, छोटू को, कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि तू नहीं निकाल पाएगा, कोई था ही नहीं इसे कुछ कहने वाला। तो इसे पता ही नहीं था कि ये वो नहीं निकाल सकता। उसने जेन्युइनली ट्राई किया, कोशिश करी, अपनी पूरी एफर्ट लगाया और खींच लिया उसको। अगर वहां पे लोग होते जो खड़े होते और छोटू को बोलते कि नहीं निकाल पाएगा, तू नहीं निकाल पाएगा, मत कर नहीं निकलेगा तुझसे, तो नहीं निकाल पाता वो पक्का। तो वहां पर उसे कोई ये बताने वाला ही नहीं था कि तू नहीं कर सकता, इसलिए वो कर गया। इन मोस्ट ऑफ योर फेलियर्स, यू
you listen to people around you who will say कि this is not possible, you won't be able to do this, तू बड़ा कहीं का लाट साहब लगा हुआ है, तेरे से तो नहीं होगा, दूसरों से तो नहीं हुआ, ओ शर्मा जी से नहीं हुआ, उसके बेटे से नहीं हुआ, उसने भी तो करा था. They tell you that it can't happen, and that's the reason why you are not able to pull it off. So निकाल दो अपने आसपास से ये सारी चीजें और हैव दैट फेथ इन यू कि कर लूंगा मैं, हो जाएगा ये. एंड कैंसल ऑल दिस नॉइसेस कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस कि ये पॉसिबल नहीं है. Everything is possible, anything and everything is possible, and if anybody who can do it is you. सोचने की मजा बात आ है, गया बस सर, सोच लो और हो मजा जाएगा. आ गया, मजा आ गया. इट्स 1 घंटे के बाद आई एम लिटरली स्पीचलेस राइट नाउ, क्योंकि Yeah, we had a fun evening, sir. मतलब इतना ज्यादा अच्छा इवनिंग, मतलब इतने ज्यादा एक पॉइंट्स एक मिले एक मुझे आज. एक एडिशन है, एक एडिशन है, हाँ एक एडिशन है. एक हॉबी जरूर पालो यार, एक हॉबी जरूर पालो, बहुत जरूरी है. क्योंकि क्या होगा ना, जब कोई भी नहीं होगा ना तुम्हारे आसपास, मैं अगेन एंटरप्रेन्योरियल स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूँ. जॉब में भी होगा यार, जॉब में भी ना तुम्हें कभी ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे जब तुम्हें दुनिया बहुत नीचे दिखाएगी और तुम्हारे अगेंस्ट पॉलिटिक्स होगी, होगा वो, ठीक है ना. तब वो जो हॉबी होगी ना तुम्हारी, वो हॉबी तुम्हारे लिए ना एक एक तुम्हारे को ईज आउट कर देगी. वो हॉबी, एक हॉबी जरूर बना लो, ठीक है ना. वो कुछ भी हो सकती है, वो म्यूजिक हो सकता है, वो गेम्स हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती है. लेकिन मैं इस मीडियम से ना, मैं सारे जितने भी सुन रहे हैं उनको ये बोलूंगा कि एक हॉबी प्लीज डेवलप करो. अगर इंटरेस्ट नहीं है तो देखो कहाँ किस चीज में इंटरेस्ट तुम्हें आ रहा है. वो तुम्हारे डाउन टाइम में तुम्हारे को स्टेबल कर देगी. वो एक ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से तुम एक्सट्रीम, कई जैसे एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं यार लोग, बच्चे मेंटल डिप्रेशन में चले गए और वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं. तो एटलीस्ट ना तुम उससे बच जाओगे, बिकॉज दैट विल बी योर सेविंग ग्रेस, बिकॉज दैट वुड बी समथिंग यू वुड लव डूइंग. तो जब कभी भी तुम डाउन हो गए, यू विल गो टू दैट थिंग एंड दैट विल सेव यू फ्रॉम मेंटल टॉर्चर. सो एक हॉबी प्लीज पालो, और वो तुम्हें हमेशा ही हेल्प करेगी लाइफ में. मजा आ गया सर, मतलब इतना अच्छा इवनिंग, मतलब इतने सारी चीजें मैंने आज सीखी. मुझे भी आया. लाइक मजा आया लिटरली सर. बहुत लोग मतलब कमेंट्स में बोल रहे हैं लाइक बेस्ट स्पीकर हु हैज कम टू वीआईटी, आयुषी ओबराय बोल रही है. ठीक है, मजा आ गया सर, मतलब लिटरली मजा आया बहुत, मतलब ऑनेस्ट थैंक यू आयुषी. आंसर्स आए बहुत सारे. ठीक है, पीपल लव द सेशन सर, and we are so it was our Me too honor यार. and pleasure to hold To hold have you, you as a host you. guest here. Yes, to have you as a guest and to hear you speak for 1 hour, because इतना अच्छा मैंने मेरे कॉलेज में अब तक किसी को बोलते हुए नहीं सुना है. ठीक है, and thank you sir for थैंक यू attending अक्षत. this. ठीक है, ठीक है, थैंक यू. बहुत मजा आया. ठीक है सर. Thanks And a lot Arpita, do for you want to having me say here. anything? I would love to come in person also once this Corona pandemic is over. I'll come to Bhopal Yes, and sir. Yes and sir. Sir, be a sir, part That of would be sir, great. sir, session. we will be very happy to receive you, and पूरी मतलब हम पूरी कोशिश करेंगे सर, पूरी हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे आपको. आप आओ सर, ठीक है, मजे मैं करेंगे साथ में. हॉस्टल में रुकूंगा, मैं हॉस्टल में रुकूंगा तुम लोगों के साथ, मजा आएगा. अरे बढ़िया सर, बढ़िया, यही चाहिए. Good यार, and enjoy your life यार. पता है, this is I'll tell you, this is your best time. Frankly, this college tenure is your best time. You will cherish it throughout your life. जो तुम 4 साल यहाँ बिताने वाले हो, ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये तुम्हारे करियर डिफाइनिंग नहीं बोलूंगा मैं, तुम्हारे लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट्स भी बन सकते हैं. मतलब कि जहाँ तुम्हारी ट्रेजेक्टरी, मैं नहीं बोल रहा यार हर एक को जॉब करना ही, एक तो इंडिया में कल्चर है ना, हर एक को निकल के जॉब ही करनी, वही फोकस है कि जॉब ले लो भैया, जॉब कर लो इसके बाद. आई विल नॉट से दैट. दिस इज योर लाइफ डिफाइनिंग 4 years. तुम्हारी जिंदगी का विचारधारा, तुम कैसे देखते हो लाइफ को, लोगों को कैसे देखते हो, ये डिफाइन हो रहे हैं इन 4 सालों में. तो उसको ना, उसको चेरिश करो, उसको मोल्ड करो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप की क्राफ्ट पे ध्यान दो, अपनी कॉलिंग पे ध्यान दो, और कॉन्शियस रहो यार. जो बंदा कॉन्शियस होता है ना अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने बारे में, उसको पता होता है इवेंचुअली क्या करना है. वो जो जो कॉन्शियस नहीं होते ना अपने सराउंडिंग्स को लेकर, अपने आप को लेकर, वही भटकते हैं और वही कंफ्यूज रहते हैं. तो अगर आप कॉन्शियस हो गए, जागरूक हो गए, जागृत हो गए, अपने अंदर से आपको समझ में आ गया कि हाँ, दिस इज, आई नो वेयर इन विच स्पेस आई एम, यू आर गोइंग टू डू वेल इन लाइफ. थैंक यू सर सो मच, मतलब इतना मजा आया, सच बताओ मुझे भी सर. आया, मुझे भी आया. मतलब मैं कितना, मतलब जितना मैं कम थैंक यू बोलूं उतना मेरे लिए मुझे कम लग रहा है, जितना थैंक यू बोलूं उतना मुझे कम लग रहा है. बट And yeah, it थैंक is यू सर always फॉर lovely अटेंडिंग. talking to young people. So I'll एंड show you थैंक my calling. So
This is my calling. See, Wow. this is what I play. Wow. Wow. You can play तो something for us, sir. बना लो यार, हॉबी बनाओ, कुछ मजा आएगा वो आपको ना, एटलीस्ट इट विल हेल्प यू अ लॉट इन लाइफ. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. Thank you everyone for attending Sorry. this session. It was very nice to have Varun sir. Thank you everyone for attending this session, and we'll be closing it. Thank you everyone. And please, there's a contest at 7 p.m. Please do attend it. ठीक है, रोऊंगा नहीं मैं अभी. ठीक है, खुशी के आंसू आएंगे जरूर. ठीक है, प्लीज there's a contest, do attend it guys. 7 p.m. हम आपको फ्री एंट्री है और हम आपको पैसे बांट रहे हैं भाई. ठीक है, आओ अटेंड करो, पार्ट लो, एंड प्राइजेस है. ठीक है, 2000 रुपीज का प्राइस पूल है. पहला फर्स्ट प्राइज 1000, नेक्स्ट 750, 500, ऐसे करके प्राइजेस है. टॉप 5 को प्राइजेस मिल रहे हैं. आओ अटेंड करो, मजे लो, जिंदगी में मजे लो. ठीक है, पार्ट लो, एक्सपीरियंस लो, देखो चीजें कैसे चल रही है. एंड we hope to see everyone in the contest. The link will be in the description as well as in the comment section below. Please join it. Thank you.